Okay, so now let's find out stability. Now in time domain, we already know that if system, LTI system, if it is stable, then its impulse response must be absolutely integrable. Let me write this sentence, and which we have already covered. The stability of LTI system is equivalent to its impulse response being absolutely integrable. Which mathematically means that if you have impulse response, if you take its magnitude, and then if you integrate it from minus infinity to plus infinity, this should be less than infinity. And that will ensure that given system is stable. Now, how to apply this behavior of stable LTI system in S domain? Now, whenever any signal which fulfill this criteria, let me make a general statement that if you have a signal x of t, and then if you take its magnitude, and then if you integrate it from minus infinity to plus infinity, and if it is less than infinity, that is a necessary requirement for the Laplace transform to be convergent. This ensure that Fourier transform of x of t is finite. So when we were studying Fourier transform, so we asked this question: is it possible to find Fourier transform of any given signal? And the answer to that question was, if signal fulfill this condition, then it will ensure that Fourier transform is finite, or we will say that Fourier transform exists. So based on the same logic, if impulse response fulfill this condition, it will mean that the Fourier transform of h of t will converge. Okay, so it means Fourier transform of h of t converges. What you can say, Fourier transform is finite. Now, if Fourier transform of h of t converges, then we can also say that Laplace transform also converges. Why? Because the relationship between Laplace transform and Fourier transform is Fourier transform is Laplace transform evaluated at s equal to j omega. Okay, so now let me further add, since Fourier transform equals the Laplace transform, evaluated along j omega axis. This is something which we have already covered, that if you have Laplace transform, if you put s equal to j omega,
that will give you x of j omega, which is the Fourier transform. So this is the relationship between Laplace transform equal to Fourier transform. So whenever a unit impulse response fulfill this criteria, then its Fourier transform will also converge. And because Fourier transform is a special case of Laplace transform when we put s equal to j omega, so it means if Laplace transform is also converging, it means this must be included in the region of convergence. So if j omega axis is included in the region of convergence of system function, that will indirectly mean that our system is stable. So now let me write this important statement. An LTI system is stable if and only if ROC of its system function, that is h of s, includes the entire j omega axis, that is real part of s equal to 0. So now we can also identify whether a given system is stable or not by looking at the system function and then finding out what is the associated region of convergence of the system function. If the region of convergence of a system function, if it includes j omega axis, that will mean this is a stable system. And conversely, if system function ROC doesn't include j omega axis in its ROC, then it means that our system is not stable. So let's solve one example, and that will clarify any confusion. So let's assume that we are given system function of an LTI system, and it is s minus 1 divided by s plus 1 into s minus 2. And let's assume that we are not given any information about region of convergence. So let's consider all possibilities with respect to this system function. Okay. So for that, I will draw the pole zero plot of this system function. So there is 1, 0 at s equal to 1. So there is 1, 0 at plus 1. There is one pole at s equal to 2. And there is one pole at minus 1 as well. So this is the pole zero plot for this given system function. Because region of convergence is not specified, so we know that with respect to this pole zero plot, we can assign different region of convergence to this particular system function. Now, let's assume that we are given this information about this system.
system is causal. So this is what is given to us. We are given expression of system function. We are given this statement that system is causal, and we are not given any information about region of convergence. Okay. So based on this information, can you specify what will be the region of convergence? Yes, sir. Actually, from -1 and between -1 and +2, sir. -1 to +2. Sir, Yes. Ji, ab 1 to 2. 1 to 2. Ji. Anyone else? Are greater than 2. Yes. What is the possible ROC? Greater than 2. Greater than 2. Why? ऐसा क्यों होगा? सर हमने कहा कि काजल के लिए h of t equal to 0 पर t less is equal to less than 0. तो -1 को हम नहीं ले सकते, तो t less than 0 है और 1 Causal को again. Causal, अगर system causal हो तो हमने क्या पढ़ा था? What will be the corresponding ROC? क्या होना चाहिए? राइट हाफ प्लेन Right होगा side. सर। यस, राइट हाफ प्लेन होगा। और जिसको हमने फिर इस तरह भी कहा था कि राइट हाफ प्लेन का मतलब ये भी होगा टू द राइट, इट विल बी टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। तो राइट मोस्ट पोल आपके पास ये है, तो मैं यहाँ पे इसको करके, तो ये मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब है कि अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो इससे मैं आरओसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर मुझे ये गिवन नहीं है, सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन है, इसके बेस पे मैं कहूंगा कि इस सिस्टम फंक्शन का आरओसी ग्रेटर देन +2 होगा। सर इसका मतलब है कि ये स्टेबल नहीं होगा सर। यस, ये बिल्कुल आपने जिस पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रहा था, अभी हमने ये जो स्टेटमेंट दी थी, अब मेरा क्वेश्चन ये होता कि ये हमने बता दिया कि सिस्टम कॉजल है, तो मैं क्वेश्चन ये मेरा ये बनता था कि इज इट स्टेबल सिस्टम। ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे करता तो आप क्या कह रहे थे? आपने क्या जवाब दिया कि ये स्टेबल नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है ये आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि इसमें j ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं है सर। यस यस, दैट इज करेक्ट। इसमें ये j ओमेगा एक्सिस हमारे आरओसी के अंदर इंक्लूडेड ही नहीं है। और ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि h of s includes the entire j omega axis। तो रियल पार्ट ऑफ s इक्वल टू 0, क्योंकि ये है इसके उसमें नहीं है, तो हम कहेंगे कि it is not stable। नाउ एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। यस, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन होती कि सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह कह रहा हूँ कि हमें क्या गिवन है, हमें h of s जो है वो गिवन है, और हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि सिस्टम इज स्टेबल, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है हमें गिवन नहीं है। ओके, तो इसके बेस के ऊपर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होना चाहिए? सर ग्रेटर देन -1। सो हमारे पास एक, सर अब वो इंक्लूड होगा j ओमेगा। यस, मैं इसको अगर कहूँगा तो इट्स +1 +2 माइनस। यस, सो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है, और अब हमें फाइंड करना है कि इसका आरओसी क्या हो सकता है। अगर ये इंफॉर्मेशन है तो क्या, कौन सा होगा आरओसी, क्या बनेगा आरओसी? It will be Greater from than -1 to +2 sir, between -1 and +2। यस, सो इट मीन्स कि इस केस में हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इसका मतलब ये है कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा।
There is no other possibility. So based on this, अब हम लिखेंगे region of convergence के बारे में हमने क्या find कर लिया? It is a real part of S less than +2 greater than -1. Okay. Now एक और possibility हम देख लेते हैं. ये तो second possibility. Third possibility मैं इसको draw कर रहा हूँ and then you can tell me कि ये कौन सा case होगा. Let's assume हमें क्या information given है? हमें ये function given है. And we are also given ROC. और ROC इस तरह given है कि real part of S is less than -1. And we are asked this question: what type of system is this? तो क्या आंसर होगा जी? Unstable system. Unstable system. Unstable. Yes, sir. And Anti-causal. Non-causal. Non-causal. जी सर ये अनस्टेबल भी होगा और नॉन कॉजल भी होगा. नॉन कॉजल भी होगा. ओके. और नॉन कॉजल में एक स्पेशल केस है. ये कौन सा केस? Anti-causal. यस, ये एंटी कॉजल. So you can see that system function और ROC उसकी ROC के बेस के ऊपर हम easily बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम कॉजल है, नॉन कॉजल है, हमारा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है. सो कॉजलिटी और स्टेबिलिटी को दोनों को हम easily आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको रिलेट कर सकते हैं with the region of convergence. Now there is another important behavior of LTI system in S domain और वो मैं रिलेट करने लगा हूँ इसके साथ. कॉजल और स्टेबिलिटी दोनों को मैं एक साथ करना चाह रहा हूँ. ठीक है. इन अदर वर्ड्स आई वांट टू फाइंड आउट कि अगर एक कॉजल सिस्टम है और मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि कॉजल सिस्टम स्टेबल भी हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. कॉजल सिस्टम, ये कॉजल सिस्टम ऑलरेडी हमें पता है कि है. मैं चाहता हूँ कि ये कॉजल सिस्टम स्टेबल भी हो तो क्या होना चाहिए? सिस्टम कॉजल भी है, स्टेबल भी है, इसके लिए क्या कंडीशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर जी सर, पोल 0 से पर स्टार्ट आना होगा चाहिए. इसका ROC. क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा पोल इसका 0 पर ROC. आना चाहिए. पोल Denominator में से होगा. नहीं, ये हो ही नहीं पाता. इसका आंसर अगेन आप जो दे रहे हैं वो इस वक्त आप गलत दे रहे हैं क्योंकि अभी तक वो जो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस ही नहीं की. इफ यू रिमेंबर, आप भूल गए कि जीरो का ROC के साथ कोई ताल्लुक है ही. इफ यू रिमेंबर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में हमने क्या कहा था कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बाउंड्री पे या तो पोल होगा और अगर पोल नहीं होगा इट विल एक्सटेंड्स टुवर्ड्स कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पे चला जाएगा. ठीक हो गया. नाउ अब दोनों को, अब चीज को मैं पहले इसको वर्बली करता हूँ फिर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ. कॉजल सिस्टम के बारे में हमने क्या कहा हुआ है कि उसका ROC क्या होना चाहिए? इट शुड बी राइट हाफ प्लेन होना चाहिए. और उसको फिर Yes, sir. पोल्स के फॉर्म में मैंने क्या कहा था? इट शुड बी टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल होना चाहिए. अगर सिस्टम कॉजल है ROC मस्ट बी टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल होना चाहिए. ठीक हो गया. अब स्टेबिलिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट ये है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मस्ट इंक्लूड जियोमेट्रिक एक्सिस. Yes, sir. तो मैं अगर चाहूं कि ये सिस्टम स्टेबल भी हो, कॉजल हो, तो क्या होना चाहिए जी? यही J ओमेगा प्लेन से स्टार्ट होगा ना सर. वो सर जी पोल 0 पर होना चाहिए. पोल्स का होना चाहिए? 0 से स्टार्ट 0 पर आना चाहिए. नो. सर कोई भी पोल राइट साइड पे ना हो ना सर. हो. यस, दैट इज द करेक्ट आंसर. देयर शुड बी नो पोल ऑन द राइट साइड. इट मींस ऑल ऑफ द पोल्स शुड बी इन द लेफ्ट हाफ प्लेन. गलत. और आप यू कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द पोल्स शुड बी
should have real part negative. जितने भी पोल्स हैं उनका अगर रियल पार्ट नेगेटिव है, इट मींस कि वो सब यहाँ पे होंगे. तो जितने भी पोल्स अगर यहाँ पे हैं और सिस्टम कॉजल भी है, स्टेबल है, तो ऑफ कोर्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा. So now इसको मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, and then it will be obvious. A causal system with rational system function. Again ये स्टेटमेंट अगेन इस कंडीशन के लिए ये होना भी जरूरी है, ठीक है, रैशनल सिस्टम फंक्शन होना चाहिए. A causal system with a rational system function is stable if and only if all of the poles of h of s lie in the left half of the S plane, which means, as I mentioned, all of the poles have negative real parts. So इस केस में अगर आप जो एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे थे, यू कैन क्लियरली सी के ये जो सिस्टम है, जो जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये है, ये कॉजल एंड स्टेबल नहीं हो सकता एट द सेम टाइम. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका एक पोल आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे there is one pole which has positive real part. As a result, या तो ये कॉजल होगा, जब ये कॉजल होगा तो स्टेबल नहीं होगा, और जब ये स्टेबल होगा तो ये कॉजल नहीं होगा. अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम स्टेबल भी हो, सॉरी कॉजल भी हो, स्टेबल भी हो, तो फिर उसके लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट ये बन जाएगी, ऑल ऑफ द पोल्स शुड बी इन द लेफ्ट हाफ प्लेन. एज अ रिजल्ट सिस्टम कॉजल भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है. Now let's apply this Laplace transform to a class of system जिनको हम describe करते हैं with linear constant coefficient differential equation. So in time domain, we may have a system which is represented by this mathematical equation. So this is an example of first order linear constant coefficient differential equation. So this equation is relating the input to the output in this manner. Now let's transform this equation into S domain. So अगर हम Laplace transform इस equation पे apply करें both left and right hand side, so we based on again differential property पढ़ चुके हैं कि अगर derivative of y of t होगा तो इसका Laplace transform क्या हो जाएगा, s time y of s, where y of s is the Laplace transform of y of t plus 3 times y of s equal to x of s. And then you can easily simplify this equation. And then you will end up with this result. Y of s divided by x of s is equal to 1 divided by s plus 3. And we already know that this y of s divided by x of s must be h of s or system function or transfer function. Okay. Now the question is,
By applying Laplace transform to this given differential equation, we have been able to find the algebraic expression of h of s. But what about region of convergence? How we will find out the associated region of convergence, which is the necessary component of Laplace transform? Why we are not able to get directly region of convergence from this equation? Now, what is the reason we don't know anything about region of convergence? Is because of the reason this is a differential equation describing the relationship between the input and output of LTI system. And if you remember in some previous lectures, I have pointed this out, that simple differential equation is not the complete representation, or it doesn't give us complete information about the system. In addition to differential equation, what else should be given to us so that we can completely describe the system? क्या information हमें given होनी चाहिए जी? सिस्टम फंक्शन नो, टाइम डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ. अगर आपको टाइम डोमेन में एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है और ये इक्वेशन गिवन है, इसका जब आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो स्पेसिफिक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? Initial condition, sir. Yes, Initial yes. To initial. Yes, that is the correct answer. We must also be given initial conditions. So once we know differential equation, once we have initial condition, तो फिर हम इसका solution, specific solution find कर सकते हैं. Otherwise हमारे solution में unknown constants होंगे. As a result, there will be infinite solutions possible हो सकते हैं. So अगर हमें ये information given हो कि ये differential equation भी है और साथ में हमें कुछ और information भी given है कि वो ये है कि let's say system जो है वो causal है. So differential equation given है, system is causal है, तो ये find करने के बाद ROC के बारे में हम क्या लिखेंगे? Yes, ROC के बारे में क्या कहेंगे? राइट है आपने. Yes, it should be greater than -3. So whenever we apply Laplace transform to any system which is represented by linear constant coefficient differential equation, in addition to differential equation, we must also be given some other information so that we can associate region of convergence to the given algebraic expression that we can calculate with the help of this process. और अगेन अगर ये हमें ये गिवन होता इक्वेशन के साथ ये लिखा होता कि सिस्टम जो है वो एंटी कॉजल है, तो algebraic expression तो वही रहती, region of convergence हमारा चेंज हो जाता, हम कहते हैं real part of S is less than -3. So this was the main point कि initial conditions are necessary in order to associate region of convergence to this expression. अब ये जो हमने सिंपल एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पे ये अप्लाई किया एज अ स्पेसिफिक एग्जांपल, इसको अगर हम जनरलाइज कर दें सो दैट वी हैव अ जनरल एक्सप्रेशन. सो हमारे पास जो जनरल फर्स्ट ऑर्डर nth ऑर्डर एक्सप्रेशन है, nth ऑर्डर लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी ये फॉर्म है जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं. कोएफिशिएंट्स a के kth डेरिवेटिव ऑफ output divided by so on the left hand side we have derivative of output and on the right hand side we have derivative of input. So this is the general expression. So now if we apply Laplace transform to this general expression, so we can change the order, summation operator को हम बाहर लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे Laplace operator apply कर लेते हैं, and then we can make use of the property जो हमने differential property पढ़ी हुई है Laplace transform की, वो अगर हम इस पे apply करें तो we will get this result.
So we will end up with s raised to the power k y of s. And similarly, right hand side पे हमारे पास आ जाएगा s raised to power k into x of s. Again, we can take this out because variable is k. And then we can bring these two together on the left hand side, and we will get y of s divided by x of s, and we all know that y of s divided by x of s is h of s. So we get h of s, which is y of s divided by x of s, is simply coefficients bk s is to power k, where k is from 0 to m, divided by summation ak s is to power k, where k is from 0 to m. So this is the same result that we also derived for Fourier transform as well. So once any system is represented by linear constant coefficient differential equation, you can directly find the system function by just looking at the corresponding coefficients. So that was the reason कि अगर आप इस equation को देखें, ये हम directly apply कर सकते हैं. यहाँ पे 1 है, so you get 1 over here. Then you have first derivative, तो यहाँ से s आ जाएगा. There is no derivative, you get 3. ठीक है? So this is the same process जो हम Fourier transform में detail में cover कर चुके हैं. So this is another advantage of Laplace transform, that from the differential equation you can directly find out the system function. And of course ROC के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि ROC के लिए हमें कोई ना कोई extra information given होगी in terms of initial condition. Then we will be able to associate region of convergence as well. Okay, so next thing that I want to cover is system function algebra. And block diagram representations. We already know about block diagram representation, but now when we transform the representation from time domain to S domain, then we can also manipulate the system function representation. And as a result, we can design our system in totally different configuration. So as a specific example, if you remember, we talk about 3 possible configurations of systems. So a complete system can be designed in such a way that there will be number of subsystems connected in series or cascade, or maybe you have a system in which number of systems are connected in parallel configuration. And then we also talk about a very specific configuration, that is feedback system. So let's look at the system function representation of such system. So if you have a series connection, so in terms of system functions, let's say this is H1s, this is H2s. So what will be the overall system behavior? Overall system behavior, that is, its system function will be simply H, multiplication. not multiplication. Convolve. टाइम डोमेन में अगर मैं कहूं कि ये H1t है, ये H2t है. ओके, तो ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा? कन्वोल्यूशन ही होगा, कन्वोल्यूशन होगा. H1t कन्वॉल्व विथ H2t होगा. H2. In terms of
H डोमेन क्या लिखेंगे? H1s ये मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक। यस सर। सिमिलरली अगर हमारे पास पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है, सो टाइम डोमेन में भी दोनों का इफेक्ट क्या होगा कि ओवरऑल अगर हम सिस्टम को अज्यूम करें कि आई वांट टू रिप्लेस दिस सिस्टम विद अ सिंगल सिस्टम, तो एच टी होगा सिंपली H1t plus H2t, which is a linear combination, so H of s will be simply H1s plus H2s. Okay, let's talk about feedback system in the next session.